So that was Azure Virtual Desktop, right? और इसके अंदर हमने दो तीन चीज़ें पढ़ी थी. It was कि ये जो लिखा हुआ है additional gateway servers. So gateway servers, it is part of the infrastructure of Azure Virtual Desktop, and also हमने बताया था इसमें दो parts हैं Azure Virtual Desktop के अंदर. This is primarily cloud version of remote desktop services, which is available on Windows Server. So I'm just rehashing what we did last time, right? Just to revise a little bit. और उसके अंदर दो components थे. एक वो था जिसके ऊपर sessions run करते हैं users के. And we saw the sessions. If you go into right click on the taskbar or in the Windows icon, we can click on Task Manager. And Task Manager के ऊपर it shows us when it comes up the sessions running, right? We saw those things, users, right? And it shows us the users logged in and the process is running underneath them, right? And it tells you also what is CPU and all these things being used, right? यहाँ से हम disconnect भी कर सकते हैं. Different things we can do these things, right? But anyway, this is one session running. तो ट्रू मल्टी सेशन डिप्लॉयमेंट मैंने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ने Azure के अंदर they created a special version of Windows to create a multi-session on the client operating system. And this is what it looks like, just to show you. In Azure, अगर मैं कहूँ create a resource and I create a virtual machine, इसके अंदर एक image आता है, right? And images, I want to show you the image that gets used by Azure Virtual Desktop. Here are the images. I say look at all the images. सर आपकी स्क्रीन में तो सिर्फ स्लाइड नजर आ रही है. अच्छा, sorry. Let me just reshare. Just a moment. Entire screen 2. सही है? यस. गुड. सॉरी, मैंने रियलाइज नहीं किया. यहाँ पे अगर आप डालो मल्टी सेशन इन द मार्केट प्लेस ऑफ एज्योर, एंटर, let me put Windows 11. I want to see multi-session. अब यहाँ पे just to let you know, right, ये different चीजें आ रही हैं Windows 11 के अंदर. One thing to filter this is, right, we want to filter by publisher is Microsoft, right? I want to say Microsoft. Let me see Windows 11. I want to see where the multi-session is. ये different versions आ रहे हैं इसके अंदर. ये multi-session, ठीक है? तो Windows 11 you can see there's a multi-session version available. ये by default बाहर आपको available नहीं है. It's only available over here. And this was specifically created, this multi-session one was created for AVD, Azure Virtual Desktop. It's not available for anybody else also. So just to let you know, so they did a lot of work, lot of development, lot of R&D for one of the best-in-class remote desktop services, one of the best-in-class virtual desktop infrastructure, basically. सर मल्टी सेशन से मुराद ये है कि for one client virtual machine there can be multiple sessions running at the same time, है ना? Yes, multiple people can log in at the same. Multiple people can do remote desktop at the same time, right? Makes sense. क्योंकि अगर log in नहीं कर सकता वो उसके अंदर, they cannot create sessions. Session is only created when you're able to log in.
और क्लाइंट के ऊपर 2 people cannot log in, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, विंडोज क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, और लिनक्स के ऊपर it does work perfectly fine, right? तो इसके अंदर you have to log out, you have to have a disconnected session, only then other person can log in, right? अगर आप करो all control delete यहाँ पर, सॉरी आई डोंट नो अगर आपको नजर आएगा कि नहीं है, anyway वो मैं सर वो बात, दोबारा से स्लाइड नजर आना शुरू हो गई है। हाँ सही है वो, everything blacked out, that's fine. Then we talked about containers, right? It's an amazing technology. It's the next evolution, you can say, of virtualization, right? हमने पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअलाइज किया था, सॉरी हार्डवेयर को वर्चुअलाइज किया था to have a virtual machine, and now what we are doing is we are virtualizing applications and operating system configuration. तो एक OS लगा हुआ है, उसके ऊपर कई layers के अंदर different layers are running with their own configuration, with their own setting, with their own software, and they're all the layers are running independently. Now even the operating system and hardware is all virtualized, right? So that was really amazing. There's some deeper, of course, how does that work, how it happens, how operating system allows that to happen. That's another separate discussion, right? Just like virtualization के अंदर, how does this thing work, how does the whole redirection work, how does the virtualization layer work, एक पूरी लंबी discussion है architectural. इसी तरह containers की भी है, right? How does an application or the layer behaves as a single operating system, right? And all those things, right? जो मैंने बताया था. वो एक अलग technology है. There's something called C groups, control groups, that were used in Linux to get this functionality. और उसके ऊपर एक सेकंड, राइट, तो उसके ऊपर हमने कहा था कि एनीवे विल डिस्कस दैट पार्ट सेपरेटली. तो कंटेनर्स के लिए उसके इमेज बनाया जाता है एंड दैट इज देन होस्टेड, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था यू कैन प्ले विद डॉकर डेस्कटॉप, राइट? So Docker Desktop is a way to build, manage containers, play with them on your client operating system, and then you can deploy once the container is ready, up and running, it's working fine. Then you can do this one, right? And deploy it on a cloud service once your container is ready. Let me see what happened to Docker. Okay, it's starting up on my other screen. और इसके अंदर मैंने बताया था कि if you want to run a single container in Azure, you can do that in a container instance. और अब इसके अंदर पॉसिबिलिटी है, मैंने आपको कहा था मल्टीपल कंटेनर्स भी रन कर सकते हो, बट ऑन अ सिंगल इंस्टेंस बेसिकली, राइट? or a single PaaS offering or a single virtual machine. Think of it that way, right? Instead of having a full-fledged orchestration service. And if you need lot of सर हम यूँ कह सकते हैं कि जो कंटेनर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को होस्ट करता है और ऑन डिमांड कॉन्फ़िगरेशंस चेंज भी कर सकता है वेरी इजीली. we cannot say that, right? It is virtualizing. That means it is showing you that operating system exists for your environment. Just like virtualization virtualizes hardware. It shows your operating system that hardware exists, even though it's all virtual view, right? So, आपके पास तो नहीं है वो, you don't have control, but the layer acts as if you have all the control. You have everything that you need to do this, right? This is what it's emulating. This is what it's virtualizing, right? अब यहाँ मैं जब Hyper-V में जाता हूँ,
Just a second. Let's look in the Docker desktop. If I look at my image, लास्ट टाइम हमारे पास मैंने आपको रन किया था कोई चीज, लेट मी सी क्या चीज है. अब ये जो कंटेनर है, जो इमेज है, दिस इज व्हाट इट, ये लाइंस हैं उसके अंदर, and it tells you it needs Ubuntu, right? And this is the version that it needs. और इसके अंदर कोई एप्लीकेशन है कुछ, there are different things done and then it does something. ठीक है, So ये कंटेनर है. ये इमेज है, and image when it runs is called a container. ठीक है, if you look at it, ये images है. आप image create करते हो, image when it executes, that's a container. ठीक है, container is a running form of image. तो आपने image create करने होते हैं, and you test the image, you run it, make sure everything is fine, and then you deploy. ठीक है, you put that in your, you share it with anybody else, or you put them in what we call a container registry, from where it can be pulled. ये मैंने सारे images pull किए हैं from a container registry, and you can look, for example, ये hub जो बना हुआ है, ये एक central hub है Docker की तरफ से, Microsoft का भी है, and different companies have it, right? We can see, for example, let me see if I can, यहाँ पे, I think ये तो मेरा यहाँ पे local environment है. From over here, I can search, for example. These are different things, right? Nginx, Postgres, database, and all that, right? Let's see. ये बता दिया उन्होंने कि these are all the images available online for free. You can download. ये सारी different companies हैं जिन्होंने इसको wrap किया हुआ है. Lot of different companies, and they can, these companies की website पे आप जाओगे, वो बता देंगे हमने क्या किया है. What's so special about our image, right? But these are all different stuff of Postgres database, right? Similar thing over here also. मैं अगर ये Postgres वालों का खुद है मेरा ख्याल है image, right? ये official image लिखा हुआ है उन्होंने Postgres का, right? And you can see it has massive 1 billion plus downloads for this image, right? This is the official image, right? So if you want to run it, you can just download, right? So this is the registry, what we call container registry, from where anybody can run. So I can say pull, okay? And this is the command that gets done on the command line, docker pull Postgres. और ये automatically goes to the public registry of Docker, and from there it downloads and adds it to the list of the images available that you can run. This is a very, very common thing we do. Microsoft ने भी images बनाए थे of their many database SQL Server के. That's if they are available. Sorry. हमने कहा SQL Server. Or if things are kind of slowed down. No, इसको बंद करके फिर जरा I will do it. Anyway, I'll let it finish. नहीं इसका नहीं है, SQL Server का नहीं है. Let me do. हाँ आ गया SQL Server का. See, you can see. अब आपने अगर SQL Server install करना है और you want to up and running, आप you can go and download this one. ठीक है? और ये बहुत कंपनियों ने किया हुआ है. इन्होंने images बना के they have done this one, right? So we can see what Microsoft has done. सर इससे ये होगा कि वर्चुअली मैं MySQL को एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट. It's like installing on your machine but in a container. आप कंटेनर को बंद करोगे, वो इमेज पड़ा हुआ होगा आपके पास, but the program will stop, right? So it's really amazing. So I can put, for example, ये Microsoft की registry है.
MCR Microsoft Registry, यहाँ पे इनके images हैं, right? So I can do this one as well. ये tags होते हैं आगे. If I put this one, it should get the latest one anyway, right? मैं यहाँ पे करता हूँ इसके अंदर. मैं इसके अंदर command prompt करता हूँ. I can do this. For latest tag, it will put it and it start getting the SQL server, right? Of course, जब आप इसको run करते हो, it will tell कि आप इसका license set करो and various different things and ID password set करो and various different things, right? But regardless, यहाँ पे speed is just extremely good. तो यहाँ पे देखो आपको बता रहे हैं कि you can do this one. If you want to run it, you can connect with this one. Okay? But idea is you can see ये इसको image को इस तरह इस्तेमाल करते हैं. ये arguments होते हैं इसके. ये पहली दफा आप कर रहे हो, वो कह रहे हैं accept license agreement. आप इसका password set करो SQL Server के administrator का and various different things. So yeah, and it will start running, which is really amazing. कि पूरा software fully configured, it is as if it's running on your installed on your operating system. But you can see it's a very small size of this image, right? और ये अगर मैं अपनी registry में जाऊंगा अब, it's still downloading. I go back into Docker registry. अपने images में जाऊंगा जो मेरे images हैं यहाँ पे local. Right? You can see post raise here. इसको मैं run करूंगा and you can see it's very small. और मैं इसके image में जाके देख सकता हूँ इन्होंने क्या किया हुआ इसके अंदर, right? So ये YAML file है basically, which they have done to configure, and this is the thing that you have to learn. क्या commands, and there are few commands only for Docker. Environment, उसका environment variable है, run, you have to running something, and various different things, right? You create the image और उसके बाद you basically and you can see what are the different packages are installed. क्या version install हुए हैं इस image के अंदर, right? Or it's gonna ask for this installation of these things, and then you run it. It will come in the list of containers, right? So it's very powerful technology, very amazing technology. Containers. उसके बाद सर जब हम एक कंटेनर बनाते हैं तो यूजुअली ऐसा होता है ना कि हम हर प्रोजेक्ट के लिए न्यू कंटेनर बनाते हैं बिकॉज वी हैव टू शिप दैट. तो जब हम न्यू कंटेनर बनाएंगे तो उसमें हमें ये सारी चीजें हर बार इंस्टॉल करनी पड़ेंगी या वंस इंस्टॉल्ड वी कैन जस्ट मूव अराउंड इन डिफरेंट इमेजेस? हाँ, बेसिकली नहीं, आप जब एक एप्लीकेशन आती है ना आपकी, व्हाट यू विल डू इज, सो कंटेनर इमेजेस के साथ, कंटेनर के साथ you create microservices architecture, right? So that means you can have different components put into different containers. ताकि आपने अगर कोई चीज अपडेट करनी है, you can just update that small part. That is one thing. But yes, आप जो सारी एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, आपने जो कंटेनर बना रहे हो, आपने बता देना मुझे क्या वर्जन चाहिए इसके अंदर. वो इमेज एक ही दफा बनता है. जब इमेज बन गया, एवरीथिंग इज देयर इन द इमेज, राइट? यू डोंट हैव टू रीडू. आप जो रीडू करते हो ना उसके अंदर, वो आप ये करते हैं इसके अंदर. मैं आपको दिखाता हूँ. जो रीडू करने वाली चीज होती है वो आपका अपना कोड होता है. यू जस्ट अपडेट दोज पीसेस, राइट? बट दैट्स इट, एवरीथिंग एल्स रिमेन्स देयर. ठीक है? यहाँ पे इन्होंने अगर कोई ये कमांड्स की हुई है, कुछ और किया हुआ है, कोई फाइल कॉपी किया हुआ है, कॉपी कमांड इज अ इम्पोर्टेंट वन. ये कॉपी हुई है, ठीक है? फाइल्स कॉपी हुई हैं. तो ये दीज थिंग्स गेट अपडेटेड मोस्टली. आपकी अगर फाइल्स हैं, पाइथन फाइल्स हैं, आपकी .NET का कोड है, आपका जावा का कोड है, those are the things that will copy into the container, but rest will remain same, right? So everything is there already, and you just keep on creating new versions when you update these things, right? मैं एक separate session दूंगा to go a little bit deep into containers, right? So we'll build a small one and we'll play with these things, right? अभी सिर्फ जो चीज देखनी है, that is कि इमेज के अंदर आप उसको बता देते हो कि what do I need, right?
post tray के अंदर it tells you what you need, right? And this is the first command from it is saying I need Debian. आप जो मर्जी Linux का version रख दो, it'll run on any Linux basically, right? As long as it's running on Linux, Docker is running on Linux, it will run all your Linux-based images basically, all your Unix-based images essentially. तो यहाँ पे आपकी दो कमांड्स होती हैं, या तो Linux का वर्जन होता है या यहाँ पे Windows होता है, Windows का वर्जन होता है, राइट? एंड Docker will run everything. जो Windows के हैं, it will run on Windows. So Docker actually gets installed. आपका जो image बनता है, that is done for a specific operating system. But interesting part is Windows के ऊपर how I'm able to run these things, right? Which require Linux. And that is a very special thing inside Windows, which is WSL, Windows Subsystem for Linux. You should all play with it. It's essentially Linux running inside Windows, right? This is Ubuntu. So this is part of WSL, and you can play with WSL. It's amazing technology, and this is Linux running straight natively in Windows operating system, right? Latest one. So ये Microsoft ने बहुत बड़ा काम किया था to compete with Apple, क्योंकि Apple का background जो मैंने बताया था last class में, it's on next operating system जो Steve Jobs ने बनाई थी, right? And that became a problem for Microsoft. A lot of developers who are coming from Linux background, they opted for all the time with Apple. क्योंकि उनका Apple सारे जो उनकी commands थी, everything it was straight built in from Unix. तो Microsoft ने Ubuntu की जो parent company है Canonical, उसके साथ बहुत बड़ा काम किया. And what they did was कि उन्होंने natively integrate कर दिया Ubuntu को, और in any Linux एक Linux subsystem बनाया, Windows Subsystem for Linux, WSL, right? And from there you can install any version of Linux natively on Windows. So Docker ने Sir, क्या, when you say कि you all should play with this, तो मतलब how can we do that? कोई इसके क्या steps होंगे, क्या करना पड़ेगा हमें? वो मैं आपको स्टेप आर्टिकल दे दूंगा. बेसिकली क्या होना है कि you go and see how do you configure and install, right? WSL Windows 11. You go there, and here is the article, right? This is one of the most used feature in Windows when you're doing development, whether you're doing administration, anything. This is the one of the biggest and most commonly used features by the technical people. Okay, it tells you how to configure. That's all you need to do. It was very painful when it came in Windows 10, but now एक बस एक command है which does everything, right? So how do you differentiate this with a virtual machine? मिसाल के तौर पे if I install VMware in my Windows PC, then doesn't it do the same thing? I can have Linux running on it. नहीं, there's a very different thing, right? मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि natively आपके पास अगर development करनी है आपने, you can do that in Windows without doing anything further, without virtual machines. It's a native environment running side by side Windows, right? That is one thing. Virtual machine आपने बनानी है, then there needs to be a reason. आपने बनानी है to play with, let's say, Windows Server operating system, to understand the configuration, to create a cluster, to do all of those things, right? आपने वो करनी है, आपने उसके अंदर remote desktop services set करनी है. You will create a virtual machine of this one. But if you want to play with Linux और अपने development करनी है, you don't want to do that in a virtual machine. You want to do it in as much native environment as possible, just like a Windows के अंदर कर रहे हो. So for those kind of things, you have WSL. The virtual machine जो Hyper-V है, hypervisor, you have specific use cases. आप remote desktop services setup करो, Windows Server install करो, आप उसके अंदर services, look at the enterprise services available in Windows Server, right? But for WSL, हमारा जो specific चीज़ है, that is कि हम उसके अंदर कोई Linux, if you want to do any kind of development, अब Linux के आपके पास ये हैं containers हैं, how can you run them, right? तो WSL अगर आप install कर लोगे, see what Docker give you. Docker tell you कि आप इसको, let me see,
engine running, and I want to show you it's on the other side. You see, दूसरी स्क्रीन के ऊपर है मेरी, but I'm trying to see कि यहाँ पे अगर है वो, ये देखो, वो कह रहा है अगर आपने लिनक्स करना है, I can integrate directly with WSL2 engine. अगर मैं लिनक्स से वो करने हैं आपने डेवलपमेंट और लिनक्स से कंटेनर्स बनाने हैं, you don't have to work on Linux. I can work directly with WSL, right? This was an amazing thing that Docker did for Windows specifically. आप यहाँ पे you can create containers for Windows और containers for Linux, और एक operating system के अंदर you can play with both of them, right? मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो configuration है, that makes it right, allows you to do this one. ये देखो, right? ये Linux के साथ इस वक्त it's running right now, and it tells you all the different things. उसके बाद let me see. Sir, what is that situation when we would want to create a Linux container, and when is that situation when we would want to create a Windows container, and when do we choose which? हाँ, अगर आपने for example I want to, मेरी application has been running on Windows, ठीक है, and I want to containerize it, so I will create by default Windows containers. And if my application is Linux पे run हो रही है, and there could be many different scenarios, right? There are companies name ASP.NET की applications हैं, they have been running on Windows since forever, right? So they want to containerize it, they can do on Windows containers, right? So it's a very standard use cases. आपकी application है, और generally if you don't have, अगर new development कर रहे हो, you can straight do Linux on Linux, right? Even on .NET. तो .NET framework का पुराना version आपके पास कोई application run कर रही है, you need to create a container, then it needs to be a Windows container, right? And there's some other stuff also. अगर आपकी background jobs हैं, you want to run in a container, आपने Windows के ऊपर development की हुई है, you will do that on Windows container, right? सारा आपका code लिखा हुआ है, and there are lot of companies जिन्होंने बहुत extensive software packages लिखे हुए हैं, software jobs लिखी हुई हैं, many different things on Windows, right? आपने उनको containerize करना है, you have to put them in a Windows container, not a Linux container, right? तो वो उसकी basically वो है motivations कि आप कौन सा यूज करोगे. That makes sense. तो हमने कहा था कि ACI जो है, it's the quickest simplest way to run container. ना आपकी virtual machines हैं, ना आपने कोई बड़ी सर्विस डिप्लॉय करनी है like AKS, and आपने कोई extensive orchestration नहीं करनी, so this is what you need, ACI, right? मैं आपको दिखा देता हूँ what ACI looks like. मैं गया यहाँ पे and I said I want ACI. Container instance. Container instances, right? This is what I need. अब जो important चीज़ है containers में याद रखने की, the way deployment happens is you upload your images to a registry. It's called a container registry. Docker आपको provide करता है, अभी जो मैंने pull किया है, it's going directly to the Docker registry. Microsoft की अपनी registry है, and you can see also यहाँ पे जब हमने किया था, उन्हें Docker में तो publish किया हुआ था SQL Server, right? अपना software, but it was actually being pulled from Microsoft की अपनी registry से, right? So if you go back to images, so Docker खुद क्या है? Docker is the company that created everything, right? अब as it starts expanding everything, और उन्हें registry का सारा कुछ पूरा framework दिया, then people said we'll create our own registries, right? So that's what happened. तो Microsoft ने registry बनाई. Not only that, जब आपने खुद deployments करना शुरू करते हो, you can create private registries also. मैं भी दिखाऊंगा वो भी. I'll show you those things as well. The registry is a way where you publish
योर इमेज, और ये आप जब कंटेनर से डील करते हो, Azure Kubernetes सर्विस से डील करते हो, तो you do all of these things, right? मैं दिखाऊंगा उसको पूरा फ्रेमवर्क. I don't want to go too much deep because we want to focus on the cloud part. ये पूरे कोर्सेज हैं इनके essentially कंटेनर्स के, डॉकर के एंड AKS बेसिकली, राइट, Azure Kubernetes सर्विस. बट यहाँ पे जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ, देयर इज अ रजिस्ट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्ट्री, SQL सर्वर. If you look at it, right, you can see it's MCR, Microsoft Registry, वहाँ पे publish हुआ है, वहाँ से download हुआ है. And a very interesting part in this one is they have ported SQL Server to Ubuntu, to Linux, and you can see this thing over here, right? It's not saying Windows, it's saying I need this thing. Okay, it's very interesting part. एक history है इसकी भी बड़ी important और बड़ी interesting. We'll discuss this maybe later on. Porting SQL Server on Linux. Anyway, so we'll come to container instance. And I'll pick something, same thing, right? अब container का नाम will be, let's say, we can say CI, container instance, CS4037-0. Now, I don't want to worry about anything right now. यहाँ पे आप देख सकते हो, वो कह रहा है आपने इमेज कहाँ से पुल करना है, Azure कंटेनर रजिस्ट्री से. मेरे पास तो अभी नहीं है, अभी मैंने नहीं. ये भी एक और ऑब्जेक्ट है that we create whenever we are dealing with containers in Azure. We create Azure container registry. This is our private registry in our environment. हम यहाँ पे अपने सारे images push करते हैं. It uses the standard format जो Docker ने दिया हुआ है, and आपकी Docker command से आप अपने images को यहाँ पे push करते हो अपनी private container registry में. तो मैं कहता हूँ यार आप मुझे कोई स्टैंडर्ड क्विक स्टार्ट इमेज दे दो, और माइक्रोसॉफ्ट ने दिए हुए आपको, ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड इमेज दिया है उन्होंने आपको, मल्टीपल दिए हुए. विल जस्ट यूज दिस वन. यहाँ पे साइज चेंज कर लूंगा. ये मैंने आपको बताया था, राइट, इट्स अ पास सर्विस. आपको कंप्यूट दे रही है और बता रही है कि आप कितना कंप्यूट, आप कह रही है आपस में आपको कंप्यूट कितना चाहिए, राइट, दैट्स ऑल इट मैटर्स. आपको कुछ पीछे का इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, ना आपके पास कंट्रोल है उसका, राइट, दैट इज वन थिंग. यहाँ पे another thing, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली वो दे रहा है आपको कि ये इमेज लिनक्स का है, तो ऑटोमेटिकली जो आपको पीछे VM मिल रही है वो लिनक्स ही मिल रही है विद कंटेनर रन टाइम रनिंग ऑन दैट वन, राइट. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट. मैं कह रहा हूँ मुझे पब्लिक दे दे, एंड आई वांट अ नाइस नेम फॉर दिस वन एज वेल, राइट. आई वांट टू से CI CS4037-01. माइक्रोसॉफ्ट मुझे इसका पब्लिक नेम भी दे देगा एक. I don't want to go into all the different settings, but just showing you, it can give you a DNS entry. Port 80 दे रहा है मुझे TCP के ऊपर. This is the interesting part, right? ACI के अंदर वो कह रहा है क्या रीसेट पॉलिसी है. रीसेट पॉलिसी इज कि जब भी फेल होगा रीस्टार्ट कर दो उसको, राइट. इफ यू सी इट फेल, that means it's doing some orchestration but not too much, very minimal. It checks if the container is running, right. और ये कह रहे कि you can also choose to restart regardless of how it was stopped. अगर फेल भी ना हो but it just stops, right. Always means कि अगर ये बंद हो गया, let's see मैंने कोई ऐसी जॉब रखी है जो it works and after some time it stops, I can tell it to restart, right. Or I can say only if it crashes. उसके certain checks होते हैं that it can find out if it failed. उसके ऊपर या never, if it stops, it stops, right. तो थोड़ी सी very minimal orchestration is available in this thing as well, in ACI. Not too much, not like AKS, but little bit.
Imagine just a Hello World app, a very simple container that requires a Linux environment, container environment running on Linux. Let's see what happens. तो मैंने एक ACI का इंस्टेंस बनाया और उसके ऊपर मैंने एक कंटेनर डिप्लॉय कर दिया. We should go pretty quickly. Okay, just ready. Let's go. उसने आपको एक FQDN भी दे दिया. हमारा एक नाम दिया जो हमने कहा था, अपना URL दिया, और इसमें जस्ट फॉर यूनिकनेस इसने एक रैंडम चीज भी दे दिया हमें. बट एनीवे, लेट्स टेक अ लुक व्हाट हैपेंस. कुछ कर रहे हैं, right? So this is the power of containers, right? एक full-fledged application is up and running. एक pre-built application थी, वो अपनी पूरी configuration के साथ on a brand new operating system as a container it get deployed and it's up and running, right? आपको OS के अंदर जरा सी भी configuration करनी नहीं पड़ी. कंटेनर ने खुद बताया क्या configuration करनी है मुझे, whether it needs a website or whatever. It configured the application and on a blank operating system is running up and running, right, without doing any configuration. This is the power. आप मुझे दें सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम, माई कंटेनर विल डिसाइड क्या चीज चाहिए, वो खुद अपनी पूरी कॉन्फ़िगरेशन करके इट बी अप एंड रनिंग, राइट. एंड दिस इज एक्सट्रीमली पावरफुल. आप इसको जिस मर्जी एनवायरनमेंट के अंदर जहां कहीं मर्जी डाल दें, इट विल रन just as identical, right? This is so powerful it is. तो यहाँ पे मुझे मेन चीज देखिए कि ACI जो है टू रन अ कंटेनर इंस्टेंस वेरी क्विकली. तो इसका मतलब है जहाँ जिस भी प्लेटफॉर्म जिस भी क्लाइंट के एंड पर ये रन होगा तो उसको सेम चीज नजर आएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सिस्टम. हाँ, मेन चीज है कि आप क्लाइंट की जो मर्जी एप्लीकेशन होगी, राइट, we can very reliably containerize it and they can deploy it anywhere in their data center, and it will run perfectly fine, right? Idea is कि आपने अगर क्लाउड पे जाना है, क्लाउड पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हो, container instances are or containers are one of the ways to modernize your application, to simplify your application deployment, and upgrade strategy, right? This is the one of the latest and hottest trends in the whole industry, right? Okay, this is the way we deploy applications now. This is the way we build applications now using containers. सर ये बेसिकली थोड़ा सा ऑफ टॉपिक होगा, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे API रिक्वेस्ट करते हैं किसी कंटेनर के ऊपर या किसी सर्वर के ऊपर, तो वो हम कैसे करेंगे इसके अंदर? यार एग्जैक्टली सेम. आपने जो API रिक्वेस्ट करनी है दैट इज जनरली HTTP, राइट? तो आप वही APIs आप उनको कंटेनराइज करोगे, whether they need the web server, Java, Node, whatever it is, right? आप उनको पैकेज करो एक कंटेनर के अंदर and put it into an operating system, deploy it into ACI and it'll be up and running. और जो URL मिलेगा वहां से आपकी RESTful APIs होंगी या वहां से API रिक्वेस्ट आएंगी आपकी, आप उसके ऊपर उस URL के ऊपर जहाँ पे डिप्लॉय हुआ है वहां पे रिक्वेस्ट भेज दो आप APIs की, राइट? नो डिफरेंस व्हाटसोएवर, राइट? ओके, ठीक है सर. यहाँ पे आपको दिखा रही है और इसके अंदर काफी अदर मैट्रिक्स चीजें, लॉट ऑफ थिंग्स इट शोज यू, राइट?
It tells you also CPU usage कैसा and all those things. सर जब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं और 3-4 इंजीनियर्स एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो वो गिट पे अपना सिर्फ कोड पुश करेंगे या पूरा का पूरा कंटेनर पुश करेंगे लाइक इमेज? यार इमेज का कोड, इमेज जो होता है वो पुश होता है बेसिकली, वहाँ पे YAML फाइल आपकी पुश होती है, ठीक है, आपकी गिट के अंदर. और गिट के अंदर पाइपलाइन बनाते हो आप टू पुश दिस इमेज, टू बिल्ड द इमेज एंड डिप्लॉय इनटू कंटेनर रजिस्ट्री, वेदर इज सिटिंग ऑन Azure और या डॉकर हब के ऊपर है कहीं पे, ठीक है. एंड फ्रॉम देयर you just push it on the you say deploy this image, latest image, आप उसको कंटेनर रजिस्ट्री में पुश करते हो एंड फ्रॉम देयर यू डिप्लॉय इट. सो एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड. बड़े सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क हैं इसके. मैं इसको आर्टिकल भेजूंगा आपको, तो यू कैन डू ऑल ऑफ दिस वन. इट्स वेरी वेरी नाइस, राइट. आप अपनी ACR बनाते हो, Azure कंटेनर रजिस्ट्री, एंड दिस इज वेयर इट इज. मैं आपको दिखा दूं उसको बेसिकली वो भी, राइट. Azure के अंदर we say कंटेनर रजिस्ट्रीज, राइट. आप ये बनाते हो कंटेनर रजिस्ट्री और डेवऑप्स के अंदर जाके आप इसका पाथ दे दो कि आप मेरा कंटेनर जो है वो बिल्ड करो एंड डिप्लॉय इट इनटू माय कंटेनर रजिस्ट्री. और फिर अपनी ACI के अंदर ACI लेट मी सी, यहाँ पे अगर आप इमेज आ गया वहाँ से डेवऑप्स से आपने YAML फाइल डाली और वहाँ फिर आप आप कंटेनर इंस्टेंस के अंदर आए और यहाँ पे आप कंटेनर्स में आके let me see if I can modify this one. Sir, by deployment, you mean that it becomes accessible to the World Wide Web, right? Deployment is basically not, I mean, deployment is to operationalize it, right? कि वहाँ से जाके जहाँ मेरा सर्वर है, मेरी वर्चुअल मशीन है, उसके अंदर it's goes and up and running. Whether up and running means it's doing it for an application, internal application, or for my users, or for some other application, or for the whole world, right? That's a separate thing. But yes, primarily, that it is now usable. That container is executing just like मैंने यहाँ पे इसको जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था या किसी और ने बनाया था पोस्ट्रे, मैंने उसका वो डिप्लॉय किया रजिस्ट्री में से एंड आई एम रनिंग इट नाउ. सेम थिंग, इट जस्ट हैपेंस टू बी आई एम डूइंग इट ऑन माय ओन मशीन, राइट. Anyway, ये अभी मैं सारा रिवाइज ही कर रहा हूँ पिछली दफा का. I don't want to go too much deep, right? Right now is introduction to what containers are and what they do, right? I don't want to go too much deep into. Maybe we'll do a separate detailed session where I can show you from scratch creating a container, deploying it in registry, and deploying it into your all these things. Just a moment. इसके अंदर मैंने दूसरी चीज बताई थी लास्ट टाइम कि बच्चों, आई वांट टू टेक आफ्टर दिस स्लाइड, आई वांट टू टेक 10 मिनट्स ब्रेक. मगरिब का टाइम हो गया. आई वांट टू प्रे, देन वी कैन स्टार्ट बैक अगेन. ओके ओके सर. तो इसके अंदर मैंने बताया था कि और ये भी सिंगल कंटेनर है. फिर मैंने बताया था देयर इज टास्क ऑफ ऑटोमेटिंग एंड मैनेजिंग मल्टीपल कंटेनर्स एंड हाउ दे टॉक टू ईच अदर. At a high level, this is called orchestration. Docker ने अपनी टेक्नोलॉजी बनाई थी, Docker Swarm, और one of the biggest one is Kubernetes right now. Okay? So, ACI जो है, it provides very basic capability of orchestration, right? क्या दिखाया था? To restart the container. ठीक है? इसमें एक और चीज है that we didn't see, which was container group. That is, if you have multiple containers that you want these capabilities, you want to deploy them together. So ACI allows you to do that also, to have a container group. जैसे आपने कहा है कि ये 2 containers हैं या 3 हैं which will run together, and it can do that also. ठीक है? Life cycle में start stopping में resources में disk है तो they will use the same disk, network and all that, right? ये concept of container group came from concept of pods in Kubernetes. Pod is basically one or more containers that share the same traits, right? Life cycle, resources and all those things. तो ACI के अंदर that was big demand कि जी आप एक कर रहे हो जरा इसको container groups कर दो.
So it is there, but it is not available from the user interface. It needs to be done through command line, right? So अगर आप देखो यहाँ पे let me see. सर लेकिन बेसिकली हमें जरूरत क्या पड़ रही है ऑर्केस्ट्रेशन करने की? ये मैंने क्लास में वी वेंट डिटेल्स ऑफ, मैंने एक सेकंड में बताता हूँ इसका, वी विल गो, मैं बताता हूँ इसका क्या था मेरा कंटेनर ग्रुप, Azure कंटेनर ग्रुप्स. तो कंटेनर ग्रुप्स की डिप्लॉयमेंट है, इट टॉक्स अबाउट कि या तो आपकी वो होगी YAML फाइल होगी and these things, right? Let me see if I can show you an actual thing, right? मेन चीज़ें यहाँ पे कंटेनर ग्रुप्स जो हैं, ये भी आ रहे आगे बेसिकली, राइट? तो यू कैन डिप्लॉय, सो पोर्टल पे से आप नहीं कर सकते इसको, ठीक है? यू कैन नॉट डू दिस फ्रॉम पोर्टल, इट मस्ट बी डन थ्रू either the ARM template or the YAML file, okay? Anyway, so container groups is the functionality inside ACI that allows you to deploy group multiple containers together in a container group and then deploy those things together and manage them together. ये बेसिकली आपके दो कंटेनर्स हैं बेसिकली, ये एक है यूजर इंटरफेस के ऊपर, ये इंटरनल है, and basically they were both talking to each other internally, but बाहर से you are basically talking to this guy only. This is the only one that is exposed outside, okay? So you don't expose the other one, but it is the component that this user interface is talking to this guy, okay? That is the idea. ये container group है, ये virtual machine is showing because underneath it is a VM, but for you it's given as a PaaS service in the form of ACI, right? Azure Container Instance. So let me pause for about 10 minutes. Let me play Maghrib and then I will come back. Okay, we'll get started. I'll pause the recording as well. So AKS is essentially Kubernetes on Kubernetes, which is customized for Azure, right? और इसमें बड़ी specific customizations की हैं Microsoft ने, right? That's why it's called Azure Kubernetes Service, not just Kubernetes Service. वो क्या है? We'll discuss those things maybe later on, right? Those are not important right now. So main चीज़ है कि what it is used for. This is at enterprise level to orchestrate. Orchestration means आप उसकी लाइफ साइकिल मैनेज करें. अगर स्टार्ट करना है, कितने स्टार्ट करना है, कितने इंस्टेंस स्टार्ट करने हैं, आपने स्केल करना है, हाउ यू विल स्केल, हाउ यू स्टॉप, हाउ यू विल रीस्टार्ट, आपने अपग्रेड किस तरह करना है, आपने नोड्स में किस तरह स्केल करना है उनको, इफ यू आर गेटिंग मेमोरी कंटेंशन एंड CPU कंटेंशन, हाउ यू विल स्टार्ट न्यू कंटेनर्स इन विच नोड, and many different things, right? You need to do that. So there are two things. Just a moment. So there are two things, right, that we need to sort out, which is in Kubernetes architecture, there are two main things, which is the control plane and nodes. The control plane जो है, that is essentially how you control the whole environment, from where it's like a controller, right? Core services हैं इसके अंदर, and these services does all the orchestration of your workloads of your containers on the different nodes. और nodes are essentially virtual machines, ठीक है? तो आपकी कई सर्विसेज चल रही हैं कंट्रोल प्लेन के ऊपर, which could be another virtual machine, right? But वहाँ पे आपके workloads नहीं चल रहे, वो सिर्फ there's a controlling plane, controlling VM, right?
and nodes are where actually your containers run. तो सर यहाँ ये जो कंट्रोल प्लेन वाला वो वीएम होना जरूरी है या कुछ और भी हो सकता है? you need a computer, right, to run, right? जब आपको कंप्यूटर चाहिए रन करने बेसिकली मैनेजमेंट के लिए कंप्यूटर एक हमने रखा हुआ और बाकी उस रन हो रहे हैं बाकी जो वीएम्स हैं. एग्जैक्टली राइट. ओके. अब क्लाउड के ऊपर तो इट हैज टू बी वर्चुअल मशीन. इवन ऑन डेटा सेंटर्स के अंदर भी we don't create a physical computer. That means it needs some services to run, and they will run in one of the computers, in one of the virtual machines, right? यस सर. Very simply. यस सर. ओके ओके. Microsoft आपको क्या कहते हैं? Microsoft give you this control plane for free. वो कहते हैं cluster है ना, cluster management and everything and controlling, I'll give it to you. You just pay for the nodes. You just pay for the nodes on which your workloads are running. The virtual machines where your workloads are running, you just pay for that, right? It's a very good value proposition. तो जो Kubernetes है, इसके अंदर जो कंट्रोल प्लेन है, इसमें थोड़ी सी सर्विसेज रन कर रही हैं, राइट? etcd, scheduler, API, various different things, right? And this guy talks to cloud provider, आपका Azure की APIs के साथ to deal with some of the native services, right? And these are some of the virtual machines. Virtual machines के ऊपर दो services run कर रही हैं, Kubernetes and kproxy, right? ये cloud control manager है, ये CCM. It talks to underlying cloud services, कुछ storage के लिए for any kind of native services, right? It needs to talk to the cloud provider. Don't need to go too much into details of these things. The main idea है, all of these things are running as containers as well. उन्हें सारी सर्विसेज क्यों? बिकॉज दे नीड टू बी मैनेज एज वेल, ताकि दे डोंट गो डाउन. दे आर प्रोवाइडिंग क्रिटिकल फंक्शनैलिटी ऑफ द क्लस्टर, राइट? तो यहाँ पे स्केजुलर है, etcd एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? आइडिया इज कि जो कंट्रोल प्लेन की जो वर्चुअल मशीन है उसके ऊपर सर्टन कंटेनर्स आर रनिंग, और जो नोड्स हैं उनके ऊपर सर्टन कंटेनर्स आर रनिंग ऑन विच दीज सर्विसेज आर रनिंग, राइट? So everything is provided in Kubernetes as a container, which makes sense, right? Already container orchestration platform है, तो अपनी services भी is running as containers. तो API server है, that provides the APIs for Kubernetes, right? ताकि आप इसको manage कर सको. Think of it जिस तरह SQL server है. अगर SQL सर्वर जो है, हम उसको क्या करते हैं, उसका एक मैनेजमेंट स्टूडियो है that talks to the server. तो Kubernetes का जो to connect with Kubernetes and to manage it, you use the APIs. आप अपना खुद सॉफ्टवेयर लिख सकते हो that talks to API server of Kubernetes and sends commands, right? You can do those kind of things. Idea is that all the APIs, Kubernetes की जो management APIs हैं, they are exposed through the Kube API server container. अब इसके अंदर जब सेटिंग कर रहे हो तो आप कोई की देते हो कि आपकी ये सेटिंग है, थ्रॉटलिंग की, कोर्स की, एंड ऑल दैट, एंड दिस इज द वैल्यू. अब वो की वैल्यू स्टोर्स जो हैं, दे आर स्टोर्ड इन, दिस इज द etcd इज द हाई की वैल्यू स्टोर. जो इनका जो सारा डेटा है, कॉन्फ़िगरेशन है Kubernetes की, इट इज स्टोर्ड इन etcd. ठीक है? ये फिर स्केजुलर है, कॉर्ड्स को स्केड्यूल करने का, उनकी नोट्स को सेलेक्ट करने का, एंड वेरियस डिफरेंट थिंग्स, राइट? फिर जो आप Kubernetes के ऊपर जो काम भी करते हो, जो भी स्केजुलिंग करते हो, उसकी सारी जो मैनेजमेंट है, इट्स डन बाय दिस. डोंट नीड टू गो इनटू टू मच डिटेल्स. मैं आपको सिर्फ हाई लेवल कंपोनेंट्स बता रहा हूँ, ठीक है? सर बेसिकली ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये खुद भी कंटेनर्स ही हैं ना? दे आर कंटेनर्स. ओके ओके. या सर तो उसका फायदा हमें बेसिकली ये है ना कि हम उसकी मैनेजमेंट इजीली कर सकते हैं, और तो कोई फायदा नहीं है ना? नहीं, किसकी मैनेजमेंट इजी कर सकते हैं? सर जैसे फॉर एग्जांपल जो एपीआई वाला जो कंटेनर है, तो वो सारी एपीआई की फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करेगा, इसलिए हमने उसको एक कंटेनर में डाला हुआ है ना? हाँ, उसका एक और देखो, कंटेनराइजेशन
is one of the fundamental building blocks of microservices architecture, which is जी सर आपने अगर इसको अपडेट करना है API सर्वर को, आपको किसी और चीज को छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जरूरत इसको नहीं है अपडेट कर जी दें, सर राइट? Everything is बिल्कुल distributed सर in a separate container. Everything is यस separate, सर right? That is the beauty of this thing. वरना अभी SQL हाँ सर्वर के अंदर आपने कोई चीज अपडेट करनी है, आपको पूरा SQL सर्वर का पैच डाउनलोड करना पड़ता है, सर्विस पैक डाउनलोड करना पड़ता है, विंडोज का सर्विस पैक डाउनलोड यस करना सर पड़ता है, राइट? यस सर यस सर और जो नोड्स हैं उनके ऊपर ये तीन सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं. कंटेनर रन टाइम, विच इज द रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर कंटेनर्स, और क्यूब प्रॉक्सी, again it's basically networking rules हैं, how nodes talk to network, how do you implement services, how do you expose services. This is done by kube proxy. A kubelet जो है, that is basically one of the most fundamental component that does the manage the life cycle. वहाँ से सारी कमांड जो आ रही हैं वो kubelet को आ रही होती हैं. सारी जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है kubelet से हो रही होती है, ठीक है? So these three are running on the nodes, which are your Azure virtual machines in our case. So this is the control plane, ठीक है, ये वाला, और ये आपकी नोड्स हैं, इसके ऊपर ये कर रहे हैं, ये आपके कंटेनर्स रन हो रहे हैं बेसिकली, ठीक है? And then to go deep into the each virtual machine, this is how it is, right? Kube proxy आपको वो दे रही है, network controller, network interfaces that interacts with Azure virtual network. Container की जो है is talking to Azure disk, Azure files. Main चीज है, this is the high level architecture of the Kubernetes environment, right? Enterprise Kubernetes environment. Again, don't need to go too much into detail, but high level thoughts you need to know, right? What is there? So etcd, this is the API server that is doing all the work is being done by the API server. यहाँ पे सारी commands यहाँ पे आती हैं. इसका सारा storage data configuration data is sitting in this one, right? So this is the high level architecture. These things are not just कि आप इनको, it is good, very good learning example, right? When you're building your own components, how things are scaled, how things are built, how things are architected, right? So ये basically was little bit more details of Azure Kubernetes service. Then we come to Azure functions. ये हमारी वही जहाँ से हम Azure Compute हमने start किया था. We discuss all these things and coming to Azure functions. This is another service. Essentially, event driven. One of the first thing that was done by Microsoft in the serverless world, right? Serverless means आपने इसको डेडिकेटेड कंप्यूट नहीं दिया हुआ, आपने इसको डेडिकेटेड VM नहीं दी हुई. It will use compute as it is needed. It will do its work as it is needed, and you don't have to worry about paying all the time for the virtual machines or containers or anything which are not running all the time, right? अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है जो वर्चुअल मशीन या कंटेनर यूज कर रही है, दे आर रनिंग ऑल द टाइम, राइट? आपकी जो VM है अंडरनीथ वर्चुअल मशीन है कंटेनर्स के लिए या वर्चुअल मशीन्स के लिए, इट्स रनिंग ऑल द टाइम. It's not that it will stop when the work is done and start again. No, it is running all the time. Azure function is part of the architecture where you want something to run when you want it, based on some event happening, right? Some event happens. It could be a scheduler. आपने scheduler को कह दिया कि जी इतनी देर के बाद आप इसको run करना, every 1 hour, every 30 minutes, or every whatever time, and it will execute that. So the amount of transactions or amount of the इसका अपना वो methodology है Microsoft की that discusses कि how much the charges are, how the charges are being done, right? तो वो separate discussion है, but the point is when an event happens, an event could be anything. या schedule बता रहा है आपको, या आपका code run कर रहा है based on certain conditions, says okay I want to do this work now. It will call the API of the function. It will invoke the function, pass in some data and say please execute, right? So that these kind of things don't require dedicated compute. So yeah, event-based code running your service. This is the main thing. इसके अंदर
तो अब इसके डिजाइन सिनेरियोज, व्हाट आर दोस डिजाइन सिनेरियोज, राइट? ये माइक्रोसॉफ्ट ने पब्लिश किए हैं टू गिव यू द आइडियाज, राइट? आपने फाइल अपलोड करनी है, यू कैन रन अ कोड व्हाइल इज बीइंग अपलोडेड, राइट? आपने वेब एपीआई बनानी है, कुछ सर्वरलेस वर्कफ्लो है, इट रन्स व्हेनेवर यू वांट इट, व्हेन इवेंट हैपेंस दिस वर्कफ्लो रन्स, राइट? डेटाबेस की चेंजेस हैं, यू वांट टू रन सम कोड व्हेन समथिंग चेंजेस इन द डेटाबेस, डेटाबेस का इवेंट फायर हुआ, वहां से आपने इसको फंक्शन को कॉल कर लिया, इट हैपेंस, राइट? And there is, and I mean, anything is basically wherever you feel it's a good use of functions, right? Main thing is to understand it's serverless. You pay only when it is executed, and it's event driven. I'll skip this one. It's a very very important and critical slide, right? हमने virtual machine देख ली है, हमने virtual desktop देख लिया है. We need to understand the usages and the containers, right? वर्चुअल मशीन वर्सेस कंटेनर्स इज अ बिग डिस्कशन, राइट? और ये जो है मैंने आपको वो दिया है इसके अंदर आर्टिकल भी आपकी क्लास नोट्स के अंदर, ठीक है? इफ यू गो इनटू योर क्लास वर्क यू विल सी इन द कंप्यूट सेक्शन, राइट? लेट मी जस्ट शो यू दिस वन आल्सो. Just a moment. I thought मैंने पोस्ट कर दिया था सारा. हाँ सॉरी, मैंने सेव नहीं किया. So if you go into the compute, let me just show you. Virtual desktop app, containers and various different things, ACI, right? Go over them and it'll be, it's a very very important reads on this one. Let me just go back, sorry, over यहाँ पे. ये core architecture है, to make sure go over these things, okay? ये मैं यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ सारे जो इसमें डिटेल्स हैं इसकी. This topic you really want to understand, virtual machines versus containers, right? What are the differences? It's a very very important topic. Last but not least, in Azure App Services is in Azure Compute, some of the services is the Azure App Service. Okay? So it's basically saying it's a managed platform. That means platform, the whole environment is built for you. Just deploy your code. Just deploy your application. Don't have to worry about the different packages, different anything. Just to show you what it looks like, app service. Go over here. See, create. My bad. तो लेट्स से आपने एक एप्लीकेशन बनाई है, वेब एप्लीकेशन, आपकी टीम है, एंड दे कम टू यू एज एन एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर एंड दे आस्क यू कि हमें गिव अस सम सर्विसेज, राइट, ऑन दीज थिंग्स, राइट? आप हमें सर्विस दें ताकि वी कैन डिप्लॉय दिस थिंग. तो आप क्या करोगे यहाँ पे? दिस इज वन ऑफ द सर्विस दैट यू कैन गिव, राइट? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, वो कह रहा है कोड है आपका, कोड पब्लिश कर रहे हो, यू हैव कंपाइल्ड द कोड एंड लुक एट दिस ऑप्शन, कंटेनर. अगर आपकी टीम ने कंटेनराइज किया हुआ एप्लीकेशन को, यू कैन, दैट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन. व्हेन यू हैव अ कंटेनर, आपको क्या चीज चाहिए होती है? You just need to know operating system, right? अगर मैं कंटेनर कहता हूँ, that's all. उसने सारी ऑप्शंस खत्म कर दी. उसने कहा आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, right, on which you want it to run. लेकिन अगर कोड होता है, वो क्या कहता है आपको? वो कहता है मुझे बताओ आपने इसको किस में लिखा हुआ है? .NET में लिखा हुआ है, आपने इसको जावा में लिखा हुआ है, and various different things, right? And you can see there are only specific versions. If there is something else,
I think there's a way to deploy. Abhi tak I haven't come across where people have used some old or some other things, right? But you can do those things on this one as well. I'll take a look at the specifics. So let's say I say .NET. अब .NET जो मैंने बताया था क्लास में भी, it can run on Linux and Windows. I can do Linux or Windows, right? So this is web app, right? अगर containerized किया है, then we know .NET 8 is already packaged with your application container. Then all you need to know in this one is आपने Linux का किया container, Linux based or Windows based. That's all, right? So look at the beauty of this one. Even in web apps, they have integrated to give you a way to deploy your containers directly, right? सर हम जब हमारे पास माइक्रो सर्विसेज होंगी तो हमारे पास डिफरेंट कंटेनर्स होंगे, तो उनको हम इकट्ठा क्लब करके भी डिप्लॉय कर सकते हैं, वो ऑप्शन होता है? अगर तो आपको वो फंक्शनलिटी चाहिए with full orchestration, then it has to be AKS. ठीक है? अगर आप डिप्लॉय करो यहाँ पे, तो यह पूछोगे उनसे, अपनी टीम से, आप ये क्या एप्लीकेशन है, कितने कंटेनर्स हैं, and I believe you can deploy a container group also. I'll verify. But do you have a single container? It must be ACI and it must be web app. What is the difference? ACI के अंदर you can do whatever. Background job run कर रही है, code run कर रहा है, whatever it is, right? Whereas web app is only HTTP, HTTPS, right? It's a PaaS service, app service, right? इसके अंदर क्या है, आप यहाँ पे बताते हो आपको कंप्यूट कितना चाहिए. तो मैंने शुरू में बताया था बिटवीन IaaS एंड PaaS. IaaS के अंदर आपको VM मिलती है and you have full control over VM. You can log in and do whatever. In PaaS services, you are just asked how much compute do you need. This is the fundamental difference. Okay? ये आपको बताता है, पूछते हैं आपसे, what do you need? What compute power do you need? You have no control to go into that compute power. It is attached to your functionality that you need, but you are not allowed to go in. You are just asked, and it will scale it automatically based on your needs. Based on what your rules आप set करोगे, तो उसको scale करेगा. But you cannot go inside and do anything. Okay? ये virtual machine ही दे रहा है आपको underneath, but you have no control over it. आपको नजर भी नहीं आएगी ये, ठीक है? This is the important part and the difference between PaaS and IaaS. यहाँ पे वही zoning जो हमने पढ़ी थी, right? You can enable zoning or zone redundancy over here as well. वो कह रहा है database बनाना है, कुछ करना है. Let's just skip it right now. Good. Again, this one, right? Quick start sample. Again, आप कहाँ से आप deploy कर रहे हो इस image को, right? आपकी ACR है, Azure Container Registry, Docker Hub, Private Registry, whatever it is, right? You can do it. और हमने कहा जी क्विक स्टार्ट इमेज आप बेसिकली डिप्लॉय कर दो इसके अंदर. डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस वन. पब्लिक एक्सेस ऑन, दैट्स फाइन. आई जस्ट लीव ऑल द अदर सेटिंग्स, राइट? या वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, उसके अंदर आपने कहा डिप्लॉयमेंट विल बी बेस्ड ऑन कंटेनर. अब so this is, I go back and I say no, it is code. Code is running on Windows with .NET Framework 8. Again, same thing. How much compute do you need? What do you need? और बाकी सारी सेटिंग सेम है. वो डॉकर वाला टैब चला गया यहाँ से, ठीक है? New tab is here. Continuous deployment. Do you want to do DevOps? Do you want to have deployment pipelines? So on and so forth, right? आपकी अपनी repository है. All those things natively given to you as part of the platform. This is huge amount of functionality being given to you. Just amazing amount of functionality, right? Whole environment is built in to have a secure, proper DevOps-based deployment and configuration, right? So since we do not have code, मैं यहाँ पे container में आता हूँ.
and so we can play with it and see what the app service looks like, and we can do this one in North UAE. Quick start sample है मेरा Windows container on Azure app service. You're saying it's Windows container, right? Public access on है, and I will create this web app. Basics में क्या कह रहा है? कह रहे हैं web app. मैं इसका SKU change करूँगा just for the sake of it. This is one of the most expensive ones. मैं इसमें I'll get that simple. Let me see. I can get something. Your premium plan are the most expensive. I'll get something simple, cheaper. It seems कि सबसे सस्ता वही है ये वाला. So we'll pick this one. Will get it? Let's see what happens. वो कह रहा है कुछ region में कोई features नहीं available. I don't know which feature is talking about, but let me see. Anyway, I'll leave it right now. मैं आपको next time में भी demo करके दिखाऊंगा. I'll see कौन सा feature available नहीं है. तो वेब ऐप हमने देखा कि इट कैन डिप्लॉय आपके पैकेजेस ऑटोमेटिक जो आपको चाहिए, और हाईली स्केलेबल आपको एनवायरनमेंट आपको दे देगा. ठीक है, और इसमें DevOps is natively integrated, scaling is natively integrated, security is natively integrated, right? Whole environment is done. You're not dealing with VMs. आपको सिर्फ एक कंट्रोल पैनल नजर आ रहा है where you can use to deploy your applications, and you can control various different configuration of the environment. But that's about it. You have no idea of the operating system, कौन सा वर्जन है, कहाँ पे रन हो रहा है. आपको बस ये पता है विंडोज हमने एक रिक्वेस्ट की थी, and we have given requested the amount of compute. That's it, right? So this is what uh, PaaS service looks like. आपको वही चीज जो हमारा एक वेब सर्वर विंडोज के ऊपर जब वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, इट्स गिविंग which will require a huge amount of configuration, is giving you with few clicks a highly configured service with everything done properly, right, and hardened properly. तो इसके अंदर anything that is HTTPS based you can do. आपकी वेब एप्स हैं, APIs हैं, मोबाइल एप्स हैं जो आपने डिप्लॉय करनी होती हैं. All of these things you can do this one, right? Idea is that you just concentrate on writing your code. हम आपको एक ऐसी environment देंगे which you do not have to worry about anything. ठीक है? वो कह रहे हैं आपके सारा infrastructure decisions app service will handle. Load balancers, networking, servers, auto scaling, increasing servers, decreasing servers, everything will take care of it. और not only that, आपकी पूरी deployment strategy, DevOps strategy, आपकी management of the environment is deeply integrated into the platform, as we just saw. Okay? Auto scaling is there. We can scale up, scale down, and all that. Let me just create it in the meantime so we can just take a look, right? मैं इसको बना लूँ एक दफा और.
गुड। ये हमारी वेब ऐप चल गई है। नाउ यू कैन सी जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाके सारी कॉन्फ़िगरेशन करते थे, नाउ द होल कंट्रोल इज गिवन इन अ सिंपल वेब पेज। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें बता रहा है कि हमारा कंप्यूट क्या है। ये हमारा कंप्यूट है। It's showing us the complete details, memory, CPU, everything, how much data is coming, and we can change the size, right? वो हमें बता रहे हैं। Let's see something else. ये देखो scale out। हमने scale up और scale out किया था, right? This is vertical scaling, horizontal scaling. इसके अंदर you can automate this part. And it talks about, for example, कि आपके 30 instances तक जा सकते हैं, right? Current instance is only one. You can see how much it can scale to, right? And these are different ways of scaling. Automatic, उसके अंदर आप अपने rules बना देते हो। ये automatic खुद कर रहे हैं rules based। करेंगे तो हमें rules बनाने देगा हमें इसके। ये configuration आ रही है rules की, right? I'll leave it right now to automatic. सर रूल्स बेस्ड वही है ना बेसिकली, कि आप मेट्रिक क्या सेट करोगे, कितने पे थ्रेशोल्ड जो है वो आपका रीच होगा, यही है ना बेसिकली। एग्जैक्टली। यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि इसका यूआरएल क्या है, एग्जैक्टली रूल्स हमको कॉन्फ़िगर करेंगे उसके। ये हमारा डिफॉल्ट यूआरएल दिया हुआ है इसने। लेट्स सी इफ वी कैन गो एंड सी व्हाट हैपेंस। ये देखो ये कंटेनर है, वेब ऐप कंटेनर हमारा रन कर रहा है और इट्स रनिंग, राइट? ये अब कंटेनर के अंदर डिप्लॉय हुई है वेबसाइट। ये उसने विंडोज की वर्चुअल मशीन दिया है एंड इट्स अप एंड रनिंग, राइट? अ वेबसाइट। So this is the power of containers. एक विंडोज मशीन ली मैंने और उसके अंदर मैंने सिंपली आई जस्ट स्टार्टेड रनिंग माय कंटेनर। मैंने ना वेब सर्वर कॉन्फ़िगर किया, ना मैंने उसके अंदर .NET कॉन्फ़िगर किया, मैंने कुछ भी नहीं किया उसके अंदर। आई जस्ट ड्रॉप माय कंटेनर एंड इट स्टार्टेड रनिंग, राइट? आई मीन दिस इज रियली पावरफुल। So if you are in administration, you will get requests. You want to deploy your containerized application, right? So in Azure, you need to be able to understand क्या functionality है, how it will work, what service you will give them, and these are the some of the criteria you will ask them. आपके कितने containers हैं, आपको क्या services चाहिए, क्या storage चाहिए, and many different things, right? And from there, you will give them either ACI or a web app or AKS. Right? So this is an administrator. You have to take care of your environment and give the users proper services, right? From cloud perspective, this is your role, and this is what people do, what organizations do. हमें बताते हैं, for example, they say we have developers who are running containers application to set up the environment. हम environment बनाते हैं, उनकी उसे network के साथ configure करते हैं, उसे secure करते हैं, उनकी container registry बनाते हैं, and we upload all their containers over there, all their images in the registry, and from there we deploy them to their AKS, right? So we do complete end-to-end from administration perspective. You don't need to know anything about application.
but you need to know what it requires, what it needs, and all those things, right? So क्या scalability चाहिए? You will ask all these questions to the development team, right? और उसके बाद आप खुद monitor करोगे उसको कौन से containers हैं which are taking lot of memory, which are need lot of resources, on and on. You'll be able to look at and monitor everything, right? So you can see how powerful these services are. हमने ना infrastructure setup करना पड़े हैं, ना हमने कुछ किया है, and the service is up and running in a very very reliable way, in a very secure way. Application is up and running, right? So this is the power of these technologies and these services. और I mean built-in load balancing है. We don't have to worry about ना configure किया ना कुछ किया हमने कहा जब जरूरत होगी आप उसको auto scale कर देना and automatically it will get load balance and everything, right? Again, primarily it's an HTTP service, right? HTTP, HTTPS, whatever it is, right? Both Windows and Linux environments, behind the scenes, they can give you if you want Linux or Windows. Doesn't really matter, right? And again, the last point is the important one. Focus on your business, right? आप अपनी application के ऊपर focus करें, which you're trying to help business, and Azure will focus on keeping the environment up and running and being managed properly. ना इसमें operating system से deal करना है, ना उसी patching से, ना update से. You don't have to worry about anything, right? It's really, really powerful concept. Good. So we will stop here, inshallah. I will upload the recording, go over the links. I'll add some more links. This is I've taken a lot of time on the containers, on these things, ताकि मैं reinforce करूँ ये सारे concepts, which are very very critical. And we will do another workshop. Hopefully, I want to do, ताकि you can actually see this working, right? It's really amazing stuff. और जो मैंने बताया था, try to go into and आप वो pursue करो certifications. Let me just show you also. सर ये तो पेड है सर्टिफिकेशन. क्या चीज? सर ये जो CK1 की है ना सर्टिफिकेशन. Yes, देखो, yes, everything is paid, but you can at least get the preparation done, right? अपने उसमें लिखो CV के अंदर कि, but learn this thing, right? That's the idea, to learn this administration. This is the one. इससे courses भी हैं, but regardless, what I'm trying to say is do these certifications, right? This is the important thing. Prepare karo, learn the platform. This exam is, you can see how expensive it is, right? Maybe Pakistan ke liye they're pretty cheap, but important thing is to study and prepare. That is the important thing. If exam is too expensive and these things are, don't worry about it, but prepare. That's the intent. It's a Sara course material, everything they have given it to you for free. Everything is there, right? So work on those things and prepare for these technologies, right? So this is an amazing certification, but emphasis is on learning, right? Not necessary to get certified. Learn it and prepare for the whole material, right? That you can do it. इसके बड़े discount coupons मिल जाते हैं and you can get very cheap. I think this one also. ये देखो, I think 80% off भी लगा हुआ है, for example. You can do certain things. Look into these things, right? But again, important thing is learn the technologies, play with it, right? This is the important part. इसकी मैं लिख दूंगा थोड़े से material. Do these things, you can get very very good stuff, right? So inshallah, I will stop now. Any questions? No sir. So हमारी जो quiz होगी, I'll cover all the material that we have covered last time and this time. ये pretty much आधा तो मैंने वहाँ से
rehash किया, revise किया जो last time हमने Monday को पढ़ा था, and we'll cover this one in the quiz inshallah on Monday. मैं ये डाल दूँगा इंशाल्लाह आज, I will put it on the YouTube पे डाल दूँगा इंशाल्लाह इसको. So again इंशाल्लाह questions होंगे, we'll cover them. I'll try to do मेरी वो flight है इंशाल्लाह Sunday को, maybe Saturday को या Sunday को sometime I'll schedule the revision if possible. Now what inshallah maybe next time. Thank you very much. Okay, sir. Allah Hafiz. Thank you, sir. Allah Hafiz. Officer.